बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज को पढ़ने जा रहे हैं। द चैप्टर नेम इज़ द कायद विज़न इन पाकिस्तान, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बसीरत और पाकिस्तान। एक्सरसाइज में पहली चीज़ क्या है? ग्लॉसरी। ग्लॉसरी में आपको पता है कि आपने सबसे पहले वर्ड्स के स्पेलिंग याद करने हैं, देन आपने उनके सिनोनिम्स को याद करना है। So without wasting time, let's move towards our lecture. The first word is aptitude. Aptitude means rujhan, natural ability. Next word is fundamental, बुनियादी, basic or primary principle. Enormity, बहुत ज़्यादा, enormousness. Overwhelmed, maghloob, affected deeply. Next word is pivot, markazi nukta, central point. The next word is numerous, beshmar, la tadad, many. And the last word is sterling, khalis, of the highest quality. तो ये इस चैप्टर की ग्लॉसरी थी। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्ज झेल सवालात के जवाब दें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायद आज़म हैव इन हिज नेशन। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को अपनी कौम पर कितना एतमाद था? So answer is Qaid Azam had too much confidence in his nation. Even he said to the Muslims, "You are made of sterling material." कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को अपनी कौम पर बहुत एतमाद था, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि तुम खालिस मादे से बने हो। किसके बारे में कहा? मुसलमानों के बारे में कहा। The next question is, what was the Qaid's concept of our nation? कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का हमारी कौम के बारे में क्या नजरिया था? द आंसर इज कायद हैड यूनिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अवर नेशन। ही सेड दैट वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ आवर कल्चर, लैंग्वेज, वैल्यूज, ट्रेडिशंस एंड आर्ट्स, एंड अबव ऑल वी आर द मुस्लिम्स। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के अपनी कौम के बारे में बहुत मुनफरिद नज़रियात थे। वो कहते थे कि हम अपनी सकाफ़त, ज़ुबान, इक़दार, रवायात और फ़न में दूसरी कौमों से मुख्तलिफ हैं, और सबसे बढ़कर ये कि हम मुसलमान हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ कि व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन व्यू ऑफ कायद आज़म। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की नज़र में पाकिस्तान का क्या नज़रिया था? The answer is, in view of Qaid Azam, the ideology of Pakistan was based on the Islamic principles. He believed that the Muslims are independent nation and their collective or individual identities should not be merged at any cost. कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की राय में नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद इस्लामी असूलों पर थी। वो यकीन रखते थे कि मुसलमान एक आज़ाद कौम हैं और उनकी इनफरादी और इज्तिमाई पहचान किसी भी कीमत पर ख़त्म नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट कैन बी द पॉसिबल सोल्यूशन टू आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स। कि हमारे मौजूदा मसाइल का मुमकिना हल क्या हो सकता है? द आंसर इज़ द पॉसिबल सोल्यूशन टू आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स इज़ दैट वी शुड फॉलो Qaid's advice. Walk, walk and walk. We are bound to succeed and we should be loyal to our country. मौजूदा मसाइल का मुमकिना हल ये है कि हमें कायद की नसीहत की पैरवी करनी चाहिए। कायद की नसीहत क्या थी? काम, काम और सिर्फ काम, और कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी, और हमें अपने मुल्क से मुखलिस भी होना चाहिए। The last question is कि how can we become a strong nation? हम कैसे एक मजबूत कौम बन सकते हैं?
तो आंसर है वी कैन बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन बाय रिमाइंडिंग कायद्स मोटो फेथ यूनिटी एंड डिसिप्लिन। हम कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के कॉल की पैरवी करते हुए एक मजबूत कौम बन सकते हैं जो कि इत्तेहाद, ईमान और तंजीम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कि इन सर्कल द ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड्स दैट रिलेट्स टू द टेक्स्ट। अंडरलाइन वर्ड हैं, आपने उनके मीनिंग बताने हैं, टेक्स्ट के अंदर उनके क्या मीनिंग लिए गए हैं। द फर्स्ट पार्ट इज वी आर अ नेशन ही अफर्म्ड 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर अफर्म्ड वर्ड को अंडरलाइन किया गया है। नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है टोल्ड, सेकेंड है सेड एम्फेथेटिकली एंड सी इज ब्रोकन। तो अफर्म्ड होता है वसूख के साथ कहना, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक होगा, सेड एम्फेथेटिकली। सेकेंड इज वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर डिस्टिंक्टिव वर्ड को अंडरलाइन किया गया है। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है मुनफरिद, अलग। ऑप्शन है हमारे पास डिस्टिंग्विश, पावरफुल एंड वेवरिंग। सो द राइट ऑप्शन इज डिस्टिंग्विश। नंबर 3 इज कीप अप योर मोरल। द अंडरलाइन वर्ड इज मोरल। ऑप्शन क्या है? वेल्थ, फोर्टिट्यूड एंड वॉइस। तो मोरल अखलाकियात को कहते हैं, हौसले को कहते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज फोर्टिट्यूड। नंबर 4 इज डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ। ऑप्शन क्या है? अटेंडेड टू, बी इज स्केयर्ड एंड थर्ड इज स्क्वेयर्ड अप। तो अफेड का मतलब होता है खौफजदा होना। सो द राइट ऑप्शन इज स्केयर्ड। नंबर 5 इज वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम। अंडरलाइन वर्ड है फेस। ऑप्शन है हमारे पास रिपेयर, कॉप विद और नंबर 3 पे है करेक्ट। तो फेस मतलब सामना करना, तो राइट ऑप्शन होगा कॉप विद। तो ये अंडरलाइन वर्ड थे। नेक्स्ट बी पार्ट हमारे पास आ रहा है कि कंसल्ट अ थिसॉरस एंड फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमने उनके मीनिंग बताने हैं थिसॉरस में से फाइंड आउट करके, देन हमने उनके सिनोनिम्स बताने हैं। द फर्स्ट वर्ड इज मोरल, हौसला। Synonym is self-esteem. Number 2 is voyage, bahri safar, traveling through water. Next word is ambition, maqsad, purpose, or you can say aim. Nomenclature, नाम रखने के असूल, the rules of naming. Identity, पहचान, recognition. Distinctive means इम्तियाजी, नुमाया, distinguished or you can say characteristics. And the last word is emergence, zuhur, rise. The next word is struggle, koshish, strive, numerous, लातादाद, बहुत से, many, countless. Next word is strong, मजबूत, powerful, mighty, or you can say brave. And the last word is ideology, nazriya, model, or you can say best circumstances. तो यहाँ पर बी पार्ट भी कंप्लीट होता है।